In today's fast paced world, mental stress and an unhealthy lifestyle have become pressing concerns. The increasing burden of work, responsibilities, and daily challenges often leads to physical and mental exhaustion. Acknowledging these issues, Sant Garge Baba Amravati University took a significant step towards promoting awareness and well being by organizing a one-day national workshop on yoga, mental health, and lifestyle management. This workshop aimed to educate participants about holistic approaches to mental and physical well-being, emphasizing the importance of balance in life. The workshop saw the presence of esteemed dignitaries and subject matter experts who shared valuable insights. Notable speakers included Dr. Avinash Asanare, who is Registrar of the Sant Garge Baba Amravati University, and Dr. Vaishali Gudadhe, Dean of Interdisciplinary Studies, who highlighted the significance of mental well-being in today's stressful environment. They emphasized that yoga and meditation are not just physical exercises but holistic disciplines that nurture the mind, body, and soul. The event also featured renowned experts such as Dr. C.D. Agashe, Dr. Anil Karwande, Dr. Shahid Tariq Murtaza, and Dr. Surya Kant Patil, who provided significant perspectives on stress management through yoga and mindfulness. योग फक्त इथपर्यंतच नाही तर पूर्ण विश्वामध्ये पूर्ण दुनियेमध्ये अजून स्प्रेड व्हावं मला असं वाटतंय. They elaborated on how pranayama, that is breath control, dhyana, that is meditation, and asanas, that is yoga postures, contribute to reducing anxiety, enhancing focus, and improving overall health. मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया हुआ हूँ. वर्कशॉप नेशनल वर्कशॉप हुई है योग के ऊपर. योग की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो योग जो है वो लोगों को जोड़ने वाली चीज़ है. आज दुनिया में मानवता जो है वो एक ऐसे क्रॉस रोड पे आ गई है जहाँ से उसको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए. ऐसे में अगर हम योगिक प्रिंसिपल्स के ऊपर मतलब अहिंसा से वसुधैव कुटुंबकम तक का रास्ता जो है वो योग से ही पूरा हो सकता है और मानवता आपस में जोड़ सकती है. वरना जिस तरीके का खून खराबा और जिस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन और जिस तरीके की दूसरी और चीज़ें यहाँ पर दुनिया में हो रही हैं वो हमारी आपकी नज़रों से ओझल नहीं है. इन सबको अगर आपको दूर करना है तो आपको योग के रास्ते पर आना पड़ेगा. The event inspired participants to prioritize self-care, adopt healthier habits, and incorporate yoga and meditation into their daily schedules. Attendees expressed their gratitude for the opportunity to learn from experts and described the experience as transformative and enlightening.